Hello, I'm Dr. Sreekanth Shetty, Senior Consultant and Head Interventional Cardiology at Sakra World Hospital. At Sakra, we do angioplasties in complex clinical situations and to complex anatomical scenarios. Calcified coronary arteries is one such complex scenario. There are various solutions for treating calcified coronary artery lesions. The challenge that a calcified coronary artery poses to angioplasty is that unless adequately treated, it will leave the stent underexpanded, which will lead to higher chance of repeat blockage and repeat procedures in the future. There are various ways of dealing with calcium which have been available for a long time, one of which is rotablation, the other is shockwave lithotripsy, and more recently we have added one more tool to our armamentarium, that is directional atherectomy. We have been in the forefront of adopting newer technologies for the welfare of our patients. When shockwave lithotripsy was introduced in India, we were the first center to use it in the treatment of a complex patient in Karnataka. Similarly, we regularly use rotablation for treatment of calcified coronary arteries. Likewise, when diamond back atherectomy, which is a directional atherectomy, was introduced, we were the first hospital in Karnataka to use it in the treatment of a calcified lesion in our patient. The calcified lesions can be treated by rotablation or shockwave lithotripsy or by directional atherectomy, and you choose one over the other depending upon technical specifications such as nodularity of the calcium or size of the artery, whether presence or absence of tortuosity. In our patient, we choose directional atherectomy because directional atherectomy can be taken up into the coronary artery through a smaller guiding catheter which can be inserted through the wrist of the patient. In our patient, we wanted to avoid a groin procedure, so we choose directional atherectomy over rotablation. It worked well for her. We were able to do an uneventful procedure through the right wrist artery, and she stayed in the hospital for 2 days and made a good recovery and now is doing fine. It's been close to 6 months since the angioplasty and she has no complaints. So we were able to enhance our patient's experience by avoiding a groin procedure and using an atherectomy device through the right wrist, which led to a shorter stay and an uncomplicated course, which he is happy about. Thank you. मैं उमा मिस्त्री, मैं 68 इयर्स की गृहिणी हूँ। मुझे अप्रैल 2023 में सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बेंगलोर में साखरा हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट श्रीकांत शेट्टी जी को बताया और पूरा प्रोसीजर करने के बाद में एंजियोग्राम किया और उसमें पता चला कि मेरे हार्ट में 2 ब्लॉकेज है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बहुत घबरा गए, लेकिन श्रीकांत शेट्टी जी ने इतना अच्छे से समझाया और हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। और उसी दौरान मेरे को हर्निया का भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने सादिक सर को बताया और श्रीकांत शेट्टी जी ने बताया कि पहले हर्निया का ऑपरेशन करो और उसके बाद में अपन हार्ट का करते हैं। तो मेरा हर्निया का ऑपरेशन डॉक्टर सादिक सर ने किया और बहुत सफलता से किया। तो सादिक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मेरा हार्ट का ऑपरेशन है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए नई टेक्नोलॉजी और नए मशीन के साथ में करना था। तो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में डॉक्टर श्रीकांत शेट्टी जी ने मेरा हार्ट का ऑपरेशन किया और बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ। और जो श्रीकांत शेट्टी सर एक माँ की तरह मेरे को देखते हैं और बहुत हमारा ख्याल रखा है। और साखरा हॉस्पिटल में सब डॉक्टर्स, नर्सेस और पूरा स्टाफ ने इतना सबका ख्याल रखा। मुझे जो भी ऑपरेशन करने के लिए आते हैं
सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। साखरा हॉस्पिटल में साफ सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। साखरा हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटल। श्रीकांत शेट्टी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ख्याल रखना हमारा, और आप भी अपना हेल्थ का ख्याल रखो। Thank you, Sreekanth sir, and thank you to all the staff of Sakra Hospital.